Hello everyone and welcome to my YouTube channel The United Road. So welcome to another live stream first of all, and there is some news coming out from Barcelona at this point of time. Basically you can say La Liga, you can say Barcelona. So at this point of time it's like a tug of war going between the La Liga officials and the Barcelona Football Club. So we will be discussing that. We will also be talking about the Frenkie de Jong saga. Latest news. I'm not going to say that it's very conclusive or not, but yeah, few things are coming up for sure. So Mojo Jojo, welcome to the stream. Shanti bhai, welcome. Aman bhai, welcome. Guys, sudden live Saturday 2:30. थोड़ा सी न्यूज डिस्कस करनी है. We will also be talking about yesterday's game. सब सही अमन भाई. My hopes. रुक जा guys. We will be talking about how things are going at this point of time. How things are going at this point of time. I am not going to say about being into the panic mode. What I am going to talk about is how things are transpiring at this point of time in La Liga. How things are transpiring at this point of time in La Liga. So first of all, everyone, welcome to the stream. Thanks a lot for joining in. हेलो गौरव भाई, हेलो हिम्मत भाई. प्रिडिक्शन करेंगे गाइस, प्रिडिक्शन करेंगे यूनाइटेड गेम की भी. आज नहीं है, गेम कल है, बट स्टिल फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज बताना बहुत जरूरी है. कि बार्सिलोना, दे कैन नॉट रजिस्टर द साइंड प्लेयर्स. ऑलराइट, दे कैन नॉट रजिस्टर द साइंड प्लेयर्स. ये चीज सबको पता होनी बहुत जरूरी है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. They are not able to sign the players even after activating the fourth lever, which they are talking about. They won't be able to sign, they won't be able to register the players they have signed at this point of time. So people who are panicking at this point of time because Romero said that Frenkie de Jong is more likely to go to Chelsea. He is a mouthpiece at this point of time. He said the same thing about Frenkie de Jong to United 95% on the very first day. So we will be talking about that. कुछ नहीं हुआ भाई, फ्रेंकी को अभी कुछ नहीं हुआ. संजय भाई, we are not going to over panic at this point of time. I don't think we are under any pressure at this point of time. We can hit the table, Aman bhai, we can, but not sure. Kadabra, welcome to the stream. I think news is leaked to pressurize United. I feel that way as well. I feel that way as well because they are desperate to get rid of De Jong. They are so desperate to get rid of De Jong. Imagine even fourth lever. After activating the fourth lever, they are not able to register the signings. So exactly. Stan bhai, welcome to the stream. मैं वही बोल रहा guys, no need to panic at this point of time. Got in touch with Romero about his words. Yeah, so you cannot call your feeling as reporting. मैं डाल दूं भाई, मेरे को बड़ा अच्छा सा फील हो रहा है कि आज ना पक्की बात है भाई, गलगलोट इंडिया आ जाएगी. ऐसा भाई प्रिडिक्शन थोड़ी कर रहे हो तुम वहां बैठ के. You have to report. That's your job, right? You have to report. But if you are not doing that, फिर मैं क्या बोलूं? Feeling भाई, feeling का क्या करें हम? What should we do with the feeling? What we do with the feeling, your job is to report, right? Your job is to report. शाश्वत भाई कुछ नहीं हुआ है. That's why I am streaming at this point of time. People are panicking. United fans are in panic mode all over. Oh my god, Frenkie is going. At this point of time, no one knows where he is going.
The reality of Barcelona at this point of time is they cannot register the players they have signed. They cannot register a single player of. All right, मैं एक फोटो शेयर करता हूँ. I will share one photo. रुक जाओ. एक सेकंड दो, चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगी. स्टैटमैन डेव का एक वो है, मैं उसको एक बार शेयर करता हूँ. गिव मी 1 सेकंड गाइस. भाई फोर्थ इकोनॉमिक लीवर करने के बाद भी दे आर गोइंग एनीवेयर. They are not getting ahead anywhere with this. Exactly, this is more dramatic than any TV serial, any reality show. That's the fact at this point of time. Very well said, Celia. That's the fact. All right, guys. I am sharing the screen now. I am sharing the screen. Hold on a second. I am sharing the screen. सो जा साकेत भाई. Rosita, this is a look which I don't like a lot, but what I have on my face, I have to get along with this look. So, all right, guys, I'm trying to get, yeah. Okay, so guys, you can see it. You can see it on your screens now. Just give me 1 moment. ये थोड़ा स्नैप, ये बहुत स्लो चल रहा है. मैं थोड़ा इसको जूम करता हूँ. I will try to zoom it. क्योंकि ये स्लो चल रहा है, इसलिए मुझे 2 मिनट का टाइम दो. I am trying to put this. स्टेटमेंट डेव है बेसिकली. All right, चलो. अब दिख रहा है. Guys, can you watch the picture closely now? मैं थोड़ा और इसको जूम करता हूँ. 1 सेकंड रुक जाओ. Let me zoom it. इसको थोड़ा और जूम करोगा तो दिखेगा सबको. So basically what he is saying is Christensen, Rafinha, Kessie, Roberto, Kunde, none of these can be registered by Barcelona. At this point of time, they cannot register anyone. भाई मुझे तो बहुत पसंद है गलगडोट. मैं तो सीधा बोलता हूँ. Well said, Sayan bhai, well said. Guys, see, the fact of the matter is, well said, Kadabra. At this point of time, Frenkiedejong has to decide where he wants to go. No one else, just Frenkiedejong. But bidding war cannot happen, Sanjay bhai. Bidding war cannot happen. It's basically who will pay the deferred payment. It's just like that. Who will pay the deferred payment? That's it. Rosita, thanks a lot. As I said, I have so many pimples and marks on my face, rashes. That's why this look at this point of time. If United knew that they won't get... Exactly. I have been saying this for a long time, but yes. Chelsea getting into the race makes things complicated for United. अरे भाई ग्लेजर्स को क्या कॉल करना. Guys, so this is what it's all about. मैं स्क्रीन बंद करता हूं अब. ये है बेसिकली द एंटायर सागा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. ये देख लो. Barcelona not able to register all their signings. भाई एक भी साइनिंग they are not able to register. एक भी साइनिंग. That's why I am saying that stop panicking. At this point of time, panicking makes no sense. ठीक है, as a United fan, it's the Barcelona fans they need to panic. They cannot register Rafinha, Lewandowski, Kunde, Kessie, Christensen. They cannot do anything. Even after activating the fourth lever. Even after Frenkiedejong goes out, they will have to... Now, guys, Brathwaite is also asking for his deferred payment. अब Brathwaite भी बोल रहा मैं भी कहीं नहीं जाऊंगा, मेरे को भी पैसा दो. अंकित भैया, वेलकम टू द स्ट्रीम. अनीश भाई, बिल्कुल सही बात है, वेलकम टू द स्ट्रीम.
No, I won't be doing any other watch along. Tomorrow I will be doing the United watch along for sure. हेमित भाई he never tweets everything. हमेशा वो सारे tweets नहीं करता है. So I did submit at Barca calculation exactly 150 million से La Liga calculation से Barcelona at this point of time they are short. No, Daniel bhai welcome to the stream. Sambhav bhai welcome to the stream. डन है, आ जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है अंकित भैया. आई एम फ्री, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग. सो मैं कल मतलब आज वाले पे आ जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस मुझे बता देना. भाई पैसे सबके पास है बट सारे अभी मजे ले रहे हैं. They see that Barcelona at this point of time they are spending so much money but they are not paying their money, you know. So क्या करेगा वो. डन भैया, डन अंकित भैया. ब्रैथवेट टोकरपति है भाई, वो तो सब. भाई चेल्सी एंड यूनाइटेड, देखो चेल्सी से ज्यादा डेस्परेट यूनाइटेड को चाहिए वो साइनिंग. You know, United won that signing. So let's see how this basically ends up. But exactly भाई देखो 17 million deferred payment वो पे करना मतलब भाई तुम आगे के लिए बाकी क्लब्स को ना बहुत ज्यादा वो दे रहे हो बढ़ावा कि भाई यू कैन बेसिकली डोमिनेट अस इन एनी वे दैट यू वांट, you know, any way that you want. So no one will give up their, you know, wages. Thanks a lot Malin for joining. Shiva bhai says in this case if Frenkie, I don't think they should be scrutinized. You know, they have done everything by the book, Shiva bhai. You know, 17 million, it's a huge amount. And why should we pay the deferred payment that is owed by Barcelona? So Frenkie de Jong saga is toxic for Frenkie de Jong and Barcelona, obviously for United board as well. Is de Jong joining Mumbai Indians? By blue पहना दो, you never know, पहुंच भी जाएगा वो. What Barca is doing is unethical. They will be, भाई कितनों से बचेंगे वो. They all guys from last season they have, you know, ये सीजन शुरू होने से पहले they have to pay 129 million in agent fees as well as the fees that they have to pay for, you know, players they have signed. So लिवरपूल के अभी भी 25 मिलियन देने हैं बार्सिलोना को फॉर कॉटिन्यो साइनिंग, अभी भी देने हैं. मुझे कुकुरेला डील समझ में नहीं आया. I am absolutely clueless about why they wanted Kukurela for 60 odd million. You know, भाई किसी को कोई आइडिया है तो मुझे समझाओ. और इन द मीनवाइल लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, जो मैं हमेशा बोलता हूँ. गाइस किसी को कोई भी आइडिया है, if anyone has any idea why they have signed someone like Kukurela, just let me know. You know, just let me know. वेंकटेश भाई डोंट वरी, अभी 62 मिलियन भाई. ध्रुव भाई से पैनिक बाय. ध्रुव भाई पैनिक बाय मतलब क्यों करना है पैनिक? यू हैव चिलवेल, यू नो, मतलब तुम 60 मिलियन का अननेसेसरली यू आर नॉट सीइंग हिम एज अ सीबी. और अगर सीबी भी देख रहे हो तो भाई फिर व्हाई आर यू गोइंग आफ्टर फोफाना? यू हैव एस्पिलिक्वेटा एज वेल. यू नो, मेरा सर घूम रहा है टू बी वेरी ऑनेस्ट. मोस्ट एक्सपेंसिव एल बी, बिल्कुल मैं वही बोल रहा भाई, ओवर 60 मिलियन. चेल्सी ने कोई 3 ही मारा ट्रांसफर विंडो में. दे गॉट हु वाज नॉट. एग्जैक्टली सी दे आर गेटिंग प्लेयर्स बट इंटीग्रेट करना स्क्वाड के अंदर. वी विल सी. सईद भाई वेलकम टू द स्ट्रीम एंड साइड चिल. मैं वही बोल रहा हूँ, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया ये लॉजिक. आई एम नॉट एबल टू कॉम्प्रिहेंड कि मतलब क्या हो रहा है ये. यू नो 60 मिलियन फॉर समवन लाइक कुकुरेला क्यों हो रहा है ये? Exactly, he is acting like that. भाई देखो बीडीवी को तो ओले ने बर्बाद किया, ठीक है. He kept playing मैकफ्रेड और हो गया sack in the end. You know, he got sacked in the end. So भाई Alonso is leaving, ठीक है. बट सैन भाई you don't get a backup for 65 million. भाई अंधा पैसा भी है ना, तब भी Tuchel is going to be sacked
By looking at the history of how they operate, you never know. You know, it's not euro. I initially thought it was euro, then found out it was pound. भाई कोई सेंस नहीं बनता, मैं वही बोल रहा हूँ. संजय भाई इज जस्ट कमिंग बैक फ्रॉम इंजरी, बट ठीक है 60 मिलियन का बैकअप. Regardless of that, basically they have spent almost 120 million on two left backs. 120 million on two left backs. So भाई ट्यूखल को फेंक देंगे ये बाहर. अबू बकर, वेलकम टू द स्ट्रीम. They are not favorites. They are just, it's just the rumors. It's just the rumors. Don't worry. Sesko will be deciding on his team in the next 2 or 3 games. So let's see. Ruiz makes all the sense. For me, Neves for 75 million, 70 million makes no sense. Go for Ruiz for 35, 40. Makes all the sense in the world. Sesko we should get done with. I think Sesko we should get done with Ronaldo. I will give you the logic and now things will become clear. Boyle is exactly no idea about football. वो दिख रहा है भाई. That guy went after Richarlison, Rafinha, Kunde, Delete. So basically, the moment he hears a name, he goes after that. Rupa says Gugurela can play LCBN. भाई आज तक मैंने उसको सेंटर बैक खेलते तो देखा नहीं है. तो कौन से स्काउट्स है मुझे भी देखना है. Who are the scouts? Even I want to know. I feel that way, but I think with Boyle, their transfer window at this point of time is a pure mess. They have spent almost 160, 170 million. They have got players, but how many of them was their first choice? Ruiz and Nunez if Frenkie de Jong doesn't arrive. Let's see. Difficult? Let's see. Why didn't Tuchel plan a shortlist? मुझे वही नहीं समझ में आ रहा. Tuchel is a very articulate manager. वो सब कुछ already plan करके रखता है. That's why I'm a bit baffled, Sambhav bhai. Anish bhai, Tuchel is safe. Chelsea has new ownership. हो जाए भाई, इनका डिक्लाइन हो जाए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है भाई, क्वालिटी में मुझे कॉम्प्रोमाइज, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा. आई एम जस्ट सेइंग 62 million on a backup left back. They could have utilized the money in a proper way, in a different way. बैकअप ही लेना है तो भाई यू कैन ट्राई अदर ऑप्शंस एज वेल. क्यूकरेला स्टार्टिंग में विंगर था भाई, लेफ्ट विंग बैक, ही कैन प्ले रियली रियली वेल, कोई डाउट नहीं है उसमें. बट 62 million, let's see how much he repays them with. I only want Frenkie de Jong. Himit bhai, every United fan at this point of time, they want Frenkie de Jong. But what if there is no Frenkie de Jong? तो उसके आगे का भी सोचना है ना. सिर्फ ये नहीं सोच के बैठ सकते कि भाई Frenkie de Jong तो बस Frenkie de Jong. मैं वही बोल रहा हूँ गाइस, बैकअप. इमेजिन इफ यूनाइटेड वेंट आफ्टर अ बैकअप ऑफ 62 million. भाई यूनाइटेड फैंस क्या तहलका मचाते, क्या तहलका मचाते. मैं वही बोल रहा हूँ कि सब कुछ ठीक है. फर्स्ट मैनेजर टू बी सैक्ड इन माय ओपिनियन, पोटैटो बॉय could be Marco Silva. Guys, keep liking, sharing and subscribing. That helps a lot, as I always say. In the meanwhile, Anish bhai says the club has to pay out a huge amount of money to a manager. Exactly. बिल्कुल. भाई ETH प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस. भाई देखो, प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में that's the way we want our manager to speak. Lampard, very very good shout.
Lampard could be the first one to go. Absolutely agree. मार्को सिल्वा और लैम्पार्ड इन माय ओपिनियन. हमारी मांगे पूरी करो. चलो देखते हैं. I cannot guess the top 6, but Spurs will not win a trophy or not. Let's see. Spurs का ट्रॉफी थोड़ा मुश्किल है, but top 4 definitely they will get. Sahid bhai, how things go, we will have to wait and see. You know, because they have a contract with Barcelona. So Barcelona, are they going to allow them to leave, or are they going to ask for more money than they have paid? So a lot of things could happen. Dhruv bhai say, bhai Chelsea Fofana ke liye, bhai Chelsea are willing to pay 70 million plus for Fofana, but Leicester wants at least 80 plus to even start the talks. They want more than 80 million. लेस्टर तो ये भी बोल रही है भाई कि ही इज नॉट फॉर सेल. तनीब भाई वेलकम टू द स्ट्रीम. भाई मुझे इचिंग वगैरह हो जाती है, इसलिए मैं नहीं बढ़ाता. सैन भाई अभी तो नहीं होने वाला खत्म, चलेगा ये ट्रांसफर विंडो के एंड तक चलेगा. आर्सेनल स्पर्स विल डिपेंड. बिल्कुल आवर विंडो बेसिकली अनीश भाई. इफ वी गेट द साइनिंग्स दैट वी आर लुकिंग फॉर, देन डेफिनेटली वी कैन गेट द जॉब डन. अदरवाइज मुश्किल है. शॉर्ट टर्म पेन फॉर लॉन्ग टर्म गेन. संदीप भाई वो मेरा लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सब में पेन ही रहेगा. फोफाना यस दे वांट 100 ऑलमोस्ट 100 मिलियन एक तरीके से बोल दो तो 80 प्लस. बिल्कुल बिल्कुल भाई, कुछ भी पूछते हैं. वही वही. नहीं हर्ष भाई देखो, कोई यार देखो, इट्स हिज हार्ड अर्न्ड मनी राइट. 17 मिलियन कुछ डिल्यूजनल होके तो मांग नहीं रहा ना कि भाई मुझे क्लब छोड़ने दो. he is basically asking for the money that he is owed by Barcelona. He is not wrong. When you look at the club spending 160 million in the window, but they are saying, you know what, we don't have the money to pay you. Your 17 million we won't pay. हम तुम्हें 17 मिलियन नहीं देंगे, बाकी की चीजें हम सब करेंगे. So I think that makes no sense in my opinion, and he is right on his part. All in all, by situation यही है कि few journalists are saying he wants to go to Chelsea. Few journalists want saying that he wants to come to United, but अभी 100% किसी को नहीं पता. Exactly. भाई देखो 80 मिलियन से कम में वो बात भी नहीं करेंगे. And Rogers is saying Fofana is not for sale, so let's see. बिल्कुल भाई, रोमेरो ने तो अपने आप को मजाक बनवा लिया इस विंडो में. Anish bhai says only thing taken in World Cup. 100% Anish bhai, 100%. He must be talking to Frenkie de Jong on what like regular basis. आएगा भाई, देखो सब्र करना पड़ेगा. 17 मिलियन जो है मजाक नहीं होता. Abu Bakar, as I said, Chelsea are not the favorites. Thus, just the media made noise. At this point of time, we have a deal with Barcelona, and we are hopeful that Frenkie de Jong will come. So, in the meanwhile, guys who have missed on liking the stream, please do that. That helps a lot. And who is here for the very first time, listening to me for the very first time, make sure you like, share, and subscribe. That helps a lot. Frenkie de Jong and Sesko to come in and complete a 6 out of 10 window. If Frenkie de Jong and Sesko both gets in, for me it would be a 7.5 window. Not 6, 7.5 window. Things are happening भाई, मैं क्या ही बोलूं. सेस्को की साइनिंग में कॉम्प्रोमाइज नहीं आनी चाहिए. भाई देखो अब सेस्को तो हम लेंगे, बट वही है ना कि अब फिर से हम देंगे 50 मिलियन. We could have got Scamacca for less money than that, but it's been said that he's very talented, and talent भाई वो दिखता है. Talent you can see, he's very raw, but talent you can see for sure. Anish bhai says normally World Cup happen before football season. बिल्कुल बट भाई 5 सब्स्टिट्यूशन भी है. सो लेट्स सी. आई बिलीव एफडीजे एंड ईटीएच हैज स्पोकन. एफडीजे एजेंट नोज ईटीएच. एग्जैक्ट, मैं वही बोल रहा हूँ कि अभी सिर्फ
सारे के सारे स्पेकुलेट कर सकते हैं, नथिंग इज श्योर। कौशिक भाई वेलकम टू द स्ट्रीम। भाई मार्टिनेज में आई डिडंट हैव एनी डाउट, मुझे एक सेकंड का भी डाउट नहीं था दैट दिस डील विल गो ओवर द लाइन, यू नो, मुझे एक सेकंड का भी डाउट नहीं था। एग्जैक्टली, मैं वही बोल रहा हूँ, ही इज अ रॉ टैलेंट, विथ रॉ टैलेंट्स यू कैन ऑलवेज गेट द बेस्ट आउट ऑफ देम बाय मोल्डिंग देम इन अ सर्टेन प्लेइंग स्टाइल दैट द मैनेजर वांट्स टू प्ले। भाई he is rated as more than Haaland, he is rated more than Haaland, बिल्कुल। if FDJ and Sesko come in, then would you say 100%? 100% Anish bhai। Lakshay bhai, welcome to the stream। So guys, first the biggest news at this point of time which you need to know is Barcelona, they are not able to register any of the players they have signed. Barcelona, the La Liga has rejected. They have a difference of almost 150 million, you know, with the financials. So nobody, exactly Anish bhai। मैं वही बोल रहा ना संदीप भाई कि this is gonna take time, this is gonna take time, so let's see। संजय भाई बियर्ड रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम हो जाती है गर्मियों में, इचिंग एंड ऑल, सो दैट्स व्हाई। ध्रुव भाई हमने देखो, वी हैव अ लॉन्ग टर्म बैकअप फॉर अ लेफ्ट बैक, ठीक है, एरिक्सन, गुड साइनिंग। भाई प्लेइंग 11 था हमारे पास, ठीक है, दे डिडंट परफॉर्म, वो अलग की बात है। फ्रेंकी डियोंग विल चेंज द एंटायर डायनामिक्स ऑफ दिस टीम एंड दैट्स व्हाई वी आर आफ्टर हिम, ठीक है। यू माइट से दैट एक दो साइनिंग हम मिस करके, समवन लाइक अ स्ट्राइकर वी शुड हैव गॉन आउट एंड गेट हिम अ बिट अर्लियर, बट भाई बहुत बहुत वो तो हमेशा ही लगती है, बिल्कुल। इग्नोर ऑल रूमर्स, दिस विंडो हैज जस्ट बीन बिजार। CR7 तो अगले सीजन वैसे भी जाना, आई डोंट थिंक वी आर गोइंग टू वी आर गोइंग टू trigger his 1 year contract, I don't think so, I don't think we are going to trigger his 1 year contract, I think he will be gone। Anish bhai says, Anshu bhai, when you become very rich, get a बिल्कुल बिल्कुल अनिश भाई। भाई देखो, स्ट्रीम कर करके अमीर होने में कितना टाइम लगेगा भगवान जाने अब तो, बट जिस दिन हुआ देन फॉर श्योर। Who do you reckon will start for United tomorrow? Martinez over Lindelof? भाई एलांगा मोस्ट प्रोबेबली, मार्टिनेज स्टार्ट करना पॉसिबल लग रहा है, बट लेट्स सी। फ्रेंकी डियोंग विल बेसिकली बी आवर इंजर 100% संजय भाई। हेमंत भाई says Barcelona fans doesn't believe, भाई छोड़ो ना, वो डिल्यूडेड है आधे से ज्यादा। आई डोंट थिंक इन FDJ यूनाइटेड आएगा भाई, तो ठीक है, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ETH इज अ बिगर फैक्टर। मैं वही बोल रहा हूँ, दिस माइट बी द फैक्टर कि वो इस सीजन हमें चूज कर ले, दिस माइट बी अ फैक्टर वेयर ही चूजेस अस, सो लेट्स सी। तो भाई देखो बात यही है, रोमेरो इज सेइंग कि भाई फ्रेंकी डियोंग माइट मूव टू चेल्सी। In the meanwhile, Robson is saying that we are encouraged, we are sure that he will be coming over here. So let's see। बहुत सारे हैं भाई, बहुत सारे एक्शन बक्स हैं। भाई मुझे तो ये इस वर्ल्ड से अभी चिढ़ मच रही है, द वे ही हैज डन। तो एक दो बार गोल मारे फिर वो वापस से फील आएगी। If not Frenkie de Jong, who would you going for? By Fabian Ruiz।
Nothing by Fabian Ruiz for me. Fabian Ruiz over Neves. Over Neves, Fabian Ruiz for me. In a perfect world, Frenkie joins United, improves midfield, we get Sesko next year Champions League. Fingers crossed. 8 million में अगर वो अवेलेबल होगा तो वी माइट गो फॉर हिम ध्रुव भाई. Otherwise we won't. Otherwise we won't. तो मैं वही बोल रहा हूँ भाई कि अभी पैनिक मोड में मत जाओ. डोंट गेट इनटू द पैनिक मोड जस्ट येट. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दैट भाई बहुत सारी चीजें चल रही हैं भाई. एक तो ये चेल्सी फैंस का कोई काम धंधा नहीं है भाई. ये इतने वेले हैं. रिजेक्ट मार के चला गया भाई. एक जगह बता दो जहां पे किसी ने 100% बोला रिजेक्ट. पुलकित भाई रिजेक्शन बताऊं. कुंडे ने चेल्सी को रिजेक्ट किया, ठीक है. राफिनिया ने चेल्सी की, ठीक है. और कौन है? डिलीट. तो भाई तुम्हारे लगे पड़े हैं विंडो में और तुम्हारे यूनाइटेड फैंस को बोलने की फ्रेंकी डियोंग चला गया रिजेक्ट करके. अरे भाई जब वो कर देगा, जब चेल्सी वाली शर्ट में फ्रेंकी डियोंग खड़ा होगा ना, देन मैं सबसे पहले आके कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा कि चलो भाई यू हैव मेड अ रियली गुड साइनिंग. जस्ट बिकॉज ही इज गोइंग टू अराइवल डजंट मीन कि ही इज बिकम्स अ बैड साइनिंग. सिंपल एज दैट. मैं वही बोल रहा हूँ. चेल्सी फैन टॉकिंग अबाउट रिजेक्शन. भाई कुंडे मार के चला गया, राफिनिया मार के चला गया और ये आ रहे हैं हम पे हंसने. बिल्कुल बिल्कुल चिन्मय भाई. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम पॉइंट नहीं है पैनिक करने का. सबका अपना अपना एजेंडा है. अभी देखो सिंपल सी बात है. फ्रेंकी डियोंग इज द वर्ड जिससे अभी सबका घर चल रहा है. सबका घर चल रहा है अभी, ठीक है. So they are in the market. They are going to make sure that they utilize the name to the core. Simple. Yes, Akash bhai. Fabian Ruiz Napoli. 2 महीने से fee is agreed. भाई तूने फोन किया था क्या? फोन तक नहीं उठा रहा. या तो तू असिस्टेंट है फ्रेंकी डियोंग का जो तुझे पता है कि भाई फोन नहीं उठा रहा. अगर ऐसी बात है तो भाई और भी न्यूज दो हमें जो हमें ना पता हो कि फोन नहीं उठा रहा, टट्टी करने कब जाता है, फ्रेंकी डियोंग का डेली शेड्यूल क्या है, 17 मिलियन भाई वो लेने को तैयार है नहीं है. जब वेन यू नो कि भाई कॉल तक नहीं उठा रहा तो और भी इनसाइड न्यूज इंफॉर्मेशन होगी ना भाई. कि कब कहाँ जा रहा है, ट्रेनिंग कर रहा है नहीं कर रहा, सीबी क्यों खेल रहा है. मैं वही बोल रहा हूँ चेल्सी सपोर्टर्स को सब पता है बट उन्हें ये नहीं पता कुंडे क्यों मार के चला गया उनकी, राफिनिया क्यों मार के चला गया उनकी, डिलीट क्यों मार के चला गया उनकी. उनको बस ये नहीं पता. उनको बस ये पता है कि भाई फ्रेंकी डियोंग जो है ना चेल्सी यूनाइटेड का फोन नहीं उठा रहा. भाई ये तो वही वाली बात है. सीसीटीवी कैमरा वगैरह लगा रखे होंगे अंदर घर में. यू नेवर नो. भाई फ्रेंकी डियोंग पे कोई भी जर्नलिस्ट श्योर नहीं है. आफ्टर Romero tweeted, it was a clarification from Naman that basically it's Romero's feeling that Frenkie de Jong might move to Chelsea. अरे भाई रिजेक्शन ये अलग ही चल रहा है भाई. 3 प्लेयर से तुम रिजेक्ट होके बैठे हो, ठीक है. चेल्सी को सब लात मार के जा रहा है. 40 मिलियन में एक ऐसा बंदा उठाया है तुमने कुलीबली जो 3 साल पहले खत्म हो चुका था, ठीक है. कैसा खेलता है देख लेंगे. 62 मिलियन में कुकुरेला उठा रहे हो तुम. फोफाना डील में लेस्टर तुम्हारी मार रही है और तुम बड़ा है रिजेक्शन की बात करने. बट कोई बात नहीं भाई. तुम पहले चेल्सी फैन नहीं हो जो डिल्यूडेड है. बहुत सारे देखे हैं पहले भी, आगे भी बहुत देखेंगे. अरे वो चेल्सी फैन है भाई. ही इज वन ऑफ माय चाइल्डहुड फ्रेंड्स. तो इसको मजा आता है. बट चलो ठीक है. आई कैन वाउच फॉर हिम दैट ही इज वन ऑफ द बेस्ट चेल्सी फैंस दैट आई नो. टेड फुटबॉल मैनेजर खेल रहा है भाई. पता नहीं क्या ही कौन क्या खेल रहा है. आदित्य भाई वेलकम टू द स्ट्रीम. अनिश भाई सेइंग आई एम प्रीटी श्योर एटीएच नो ही विल बी गेटिंग एफडीजे. चलो देखते हैं भाई. प्लान्स बनाना एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम और प्लान्स एग्जीक्यूट करना. अनिश भाई वही वाली बात है. थॉट्स ऑन सेस्को भाई. देख के तो लग रहा है बहुत अच्छा टैलेंट है बट 55 मिलियन वर्थ का टैलेंट अभी तो नहीं है. ही जस्ट 19. ही इज वेरी रॉ. He can be molded, but exactly 62 million for Cucurella.
रतिन भाई वेदर तो दिल्ली में भी थोड़ा सही हो रखा है पिछले 2-3 दिन से। ध्रुव भाई एट सी दिस पॉइंट ऑफ टाइम बॉयली इज अ बिट कंफ्यूज्ड। चेल्सी जो है ना, चेल्सी का एक पर्टिकुलर ऑर्डर हुआ करता था वर्क का, एब्रामोविच, मरीना, everything was in place, and now all of a sudden both are gone. I think Boyle has missed a trick by not keeping Marina till the end of the summer. मतलब विंडो तक रखते, उसके बाद मरीना को जाने देते। आई थिंक मरीना वुड हैव सेटल्ड द एंटायर टीम, यू नो। बिल्कुल भाई, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, इसमें मना थोड़ी करूंगा। हम तो 5 साल से भाई ट्रांसफर की न्यूज से भी खुश नहीं हो रहे। ट्रांसफर से भी हम क्या खुश होंगे? 5 साल में हमने कुछ करा ही नहीं है, ट्रांसफर से क्या खुश हो भाई? बैग वैग नहीं करते हम किसी को, ठीक है। वो अब पहला गेम शायद स्टार्ट कर जाए बिकॉज मार्शियल फिट नहीं है, अदरवाइज एलंगा उसके ऊपर खेलेगा, वो बेंच पे बैठेगा। बॉयली एंड वुडवर्ड बेंट टू द सेम स्कूल। भाई दिख रहा है वो, द वे दे आर कंडक्टिंग बिजनेस इन द मार्केट, वो दिख रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। रूइज नहीं आएगा, यूनाइटेड स्काउटिंग इज बैड, मुझे लगता है। बट पीपल वर आस्किंग हु वुड आई प्रेफर, सो भाई इस बात को याद मत दिलाओ यार। नो पीटर डीवीडी फ्रॉम दिस सीजन। भाई मैं क्या बोलूं, ये जब से न्यूज सुनी है मैंने, तब से तो मैं बस पुराने वाली कमेंट्री सुन रहा हूँ उसके गेम्स की, और क्या कर सकते हैं भाई। किसी का कमेंट मिस हो गया हो तो फिर से डाल देना, जो मैं हमेशा बोलता हूँ। कौशिक भाई अभी लेटेस्ट कुछ नहीं है। सेस्को विल बी डिसाइडिंग ऑन अ टीम वेरी वेरी शॉर्टली, बस यही एक लेटेस्ट न्यूज है। अगले 2-3 दिन में इट्स अ 3 क्लब रेस, चेल्सी इज ऑल्सो इन द रेस फॉर सेस्को। ठीक है, सेस्को इज यू नो गोइंग टू मेक अ डिसीजन इन नेक्स्ट 2-3 days। भाई कौन किसकी मार रहा है पुलकित भाई, वो तो पता लग जाएगा। आई रियली वांट बॉयली टू कीप ऑन डीलिंग विद द ट्रांसफर्स, आई रियली वांट हिम टू कीप डीलिंग विद द ट्रांसफर्स। बहुत मजा आ रहा है, पहली बार चेल्सी को इतने सालों में ट्रांसफर विंडो में ना इनकी लगते देख के बहुत मजा आ रहा है। भाई देखो, किसी को भी कोई भी साइनिंग तुम लेके आओगे, दे विल हैव टू प्रूव देमसेल्फ, सिंपल एज दैट। भाई डिलीट पे अपडेट क्या है? ही विल बी प्लेइंग फॉर बायर्न म्यूनिख। लास्ट गेम वो नहीं खेला, ही स्टिल गेटिंग इनटू दैट फिटनेस। सो पीपल कॉलिंग रैशफोर्ड और पीपल प्लेइंग मेसन माउंट। भाई जब मेसन माउंट रैशफोर्ड इतना नंबर लेके आ जाएगा ना, देन वी विल टॉक। बट सैंचो, एरिक्सन, मैकफ्रेड, बिल्कुल मेरे ख्याल से भाई एरिक्सन माइट नॉट स्टार्ट पुलकित भाई, एरिक्सन माइट नॉट स्टार्ट। Because news coming Kaushik bhai from Romero is he feels that he might move to Chelsea. ये कुछ भी ट्वीट कर देता है रोमेरो आजकल, इसके अलग नशे चल रहे हैं। आई डोंट गिव अ शिट अबाउट उसका मोड भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अनिश भाई लिवरपूल फैन, लिवरपूल हैज सो मेनी गोल स्कोरर्स। भाई देखो, लिवरपूल के साथ मुझे तो नहीं लग रहा, मुझे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कुछ भी नहीं लग रहा लिवरपूल के साथ सेस्को का। बट let's see. Ron bhai, thanks a lot for joining in. Kaushik bhai says, any news on AWB? Bhai, AWB is not going anywhere. Bisaka is not in the plans of the manager, but he's not going anywhere. भाई एफपीएल में राशि को लिया है सीजन। भाई राशि भी है मेरे पास, सांचो भी है। मैं मेरी एफपीएल में तभी लगती है, मेरा यूनाइटेड प्यार एफपीएल में झलकता है और मेरी ऐसी तैसी हो जाती है। Guys, joined by 34 people at this point of time. If you have not liked the stream, make sure you do that. That helps a lot. So like, share और सब्सक्राइब करते रहो प्लीज। भाई थोड़ी बहुत और न्यूज भी आ रही है, आई विल बी शेयरिंग द न्यूज थोड़ी बहुत जो आ रही है। सो भाई मैं तभी बोलता हूँ, ये चेल्सी वाले फैंस का डिल्यूजन लेवल बिल्कुल अलग है। चेल्सी वाले फैंस का अलग ही डिल्यूजन लेवल चलता है भाई। जीएस टू यूनाइटेड इन माय ओपिनियन माइट नॉट हैपन, बट 8 मिलियन है भाई, वी माइट ट्राई टू टेक द रिस्क। भाई मोहक भाई, मेरे पास 2 पॉइंट आए हैं कल के गेम से, मेरे पास बस जीसस था।
मेरे पास बस जीसस था, तो एफडीजे नहीं आया, मुझे भी लग रहा है, इफ वी आर नॉट मेकिंग फ्रेंकी डियोंग साइनिंग, यू नो if we are not making, then by more game time for Donny and more game time for Garner. वो उनका हमेशा चलता है भाई। भाई समथिंग इज हैपनिंग तो जोक बन गया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। भाई आर्सेनल वालों को तो मैं कंपेयर नहीं करता, चेल्सी वाले स्टिल मेक्स पॉइंट, चेल्सी वाले स्टिल दे आर सक्सेसफुल, दे हैव वन ट्रॉफीज इन द पास्ट डेकेड ऑल्सो, बट आर्सेनल वालों को तो हटा ही दो भाई, उनका तो अलग लेवल चलता है, उनका अलग लेवल चलता है। पुलकित भाई वो रुक जाओ, मैं व्हाट्सएप करता हूँ स्ट्रीम के बाद। भाई देखो बात यही होती है, किसी को कोई प्लेयर नहीं पसंद, ठीक है, किसी को कोई प्लेयर नहीं पसंद, अब वो वैसा चैनल ढूंढता है जहां पे उसके अगेंस्ट फुल ऑन एजेंडा चल रहा हो, फुल ऑन एजेंडा चल रहा हो। सो भाई इनको करने दो ना, एग्रीगेट करने दो आशीष भाई, मैं वही बोल रहा हूँ, लेट देम एग्रीगेट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, डोंट पैनिक। इंटरेस्टेड इन कोडी गप्को? भाई मुल्क है, मिरर से आ रहा है, तो लेट्स सी। मैं वही पढ़ रहा था अभी, मैं वही पढ़ रहा हूँ, ये मुल्क की तरफ से आ रहा है भाई, इनसे इनको कुछ आइडिया नहीं होता भाई। देखो अभी ऑल ऑफ अ सडन फ्रेंकी डियोंग से अगर क्लिक मिलना बंद हो जाएगा तो भाई ये कहां से पैसे कमाएंगे, ठीक है। तो अब नाउ गप्को को डाल दिया है बीच में, अब गप्को डाल दिया है बीच में फॉर नो रीजन। मैं देखो, मैं एक ही चीज बोलता हूं कि चेल्सी को आई नेवर काउंट आउट इन अ ट्रांसफर मार्केट, उस चीज में तो मैं कभी काउंट आउट नहीं करूंगा, बट आई थिंक दिस सीजन दे मिस्ड ऑन अ ट्रिक, दिस सीजन दे मिस्ड ऑन अ ट्रिक by letting go, by letting go of Marina before the transfer window ended. Because with Abramovich already gone, keeping Marina would have made sure that she's building the team the way she loved to build. So, भाई देखो गेम में तो बहुत डिफरेंस आएगा यार। इमेजिन योर मिडफील्ड, imagine you from Manfred to Frenkie de Jong and Donny, or Frenkie de Jong on Eriksen, or Frenkie de Jong or Scott, or Fred for few games. So बहुत massive difference आएगा, that guy can retain the ball, that guy can spread the you know ball to any corner of the field, so difference तो बहुत आएगा यार। वी नीड CM RW और चैलेंजर फील्ड। भाई देखो ये एक विंडो में तो वैसे भी नहीं होने वाला था, whoever thought that things are going to happen in just one window, I think it was going to be difficult। करण भाई सबर सबर, अभी कुछ नहीं, चिल करो गाइस। मैंने जो लिंक जो है, इफ यू कैन शेयर विथ योर फेलो यूनाइटेड फ्रेंड्स एज वेल, दैट वुड बी ग्रेट। सो मैं वही बोल रहा हूँ कि देखो बार्सिलोना की तरफ से जो 17 मिलियन पे करेगा दे विल बी द फेवरेट। अब वो चेल्सी पे कर दे, चेल्सी विल बी फेवरेट, यूनाइटेड पे कर दे, यूनाइटेड विल बी फेवरेट, बट फ्रेंकी डियोंग का डिसीजन फाइनल होगा। सिंपल सी बात है, फ्रेंकी डियोंग डिसीजन इज गोइंग टू बी द फाइनल डिसीजन। अब वो हमारे साथ आए या वो चेल्सी के साथ जाए, एज आई सेड, वेयरएवर ही मूव्स ही इज गोइंग टू बी अ वैल्यूएबल एडिशन टू एनी टीम। कोई ये नहीं बोल सकता, भाई कल को मैं ये उठ के नहीं बोलूंगा, ऑब्वियसली इफ ही गोस टू चेल्सी आई वुड लव टू सी हिम फ्लॉप, बट मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई ऑल ऑफ अ सडन कि भाई ही इज अ पैथेटिक प्लेयर, ऑब्वियसली नॉट। करण भाई सैटरडे को दोपहर शाम के टाइम पे लोग बिजी हो जाते हैं, दोपहर को लोग थोड़े टाइम पे घर पे होते हैं, और दोपहर के टाइम पे उस तरीके से होता भी नहीं। अब शाम को फुटबॉल होगा, शाम को फुटबॉल होगा, सो I will be watching the game, guys. You will be watching the game as well, guys. Tomorrow बिल्कुल होएगा वॉच अलॉन्ग, सो मेक श्योर दैट यू आर ज्वाइनिंग इन। मैं इवेंट थोड़ी देर में डाल दूंगा वॉच अलॉन्ग का, 40 मिनट्स पहले या 30 मिनट्स पहले किस टाइम पे स्टार्ट करूंगा वो एक बार चेक कर लेना गाइस। नोटिफिकेशन ऑन कर लो, हमेशा बोलता हूँ। गौरव भाई बिल्कुल देखा आदित्य रेड्स का वीडियो, वो हमेशा हाइप अप कर देता है, और उसके बाद हम सीजन खेलने जाते हैं और हम उसकी सारी मेहनत को बेकार कर देते हैं। सो दैट्स व्हाट वी डू बेसिकली।
If FDJ joined Chelsea, that would be one of the biggest failures. See, more than our failure, it's basically on Frenkie de Jong. हमने जो करना था हमने कर दिया है भाई. कशिश भाई, मैं बोल रहा हूँ शाम के टाइम पे लोग बाहर जाते हैं. अब क्या बोलूं, मुझे खुद काम करना है. स्ट्रीम के बाद मैं खुद काम करने बैठूंगा. स्ट्रीम के बाद मैं खुद काम करने बैठूंगा. बस उम्मीद कर रहा हूँ कि फुलहम एक गोल मार दे. क्योंकि देखो, मैच तो वो जीतने से रहे. ठीक है, मैच तो वो नहीं जीतेंगे, बट अगर एक गोल मार दिया तो बहुत लोगों ने डबल अप कर रखा है भाई लिवरपूल के उस पे. एनफील्ड में पीएल जीतना है भाई. भाई देखो, ये इमेजिन ही कर सकते हैं. अभी तो एनफील्ड में हम नॉर्मल गेम नहीं जीत पा रहे अभी, गौरव भाई. ये दिस इज अ वेरी वेरी डिस्टिंक्ट ड्रीम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. We have to keep on improving. We have to make sure that we are making this team capable of fighting for the title. At this point of time, we are nowhere near close to teams like, you know, Liverpool or teams like City. But we have to keep on building. ये सीजन में हमें साइनिंग्स बहुत पहले करके खत्म करना चाहिए था. This was the season where we could have made some inroads, but unfortunately we have not been able to. This window might still turn out to be a good window, but we have to act quickly. 13th of August. 13th of August is the last date on which Barcelona has to submit their team. So before that, if they are not making the sales, before that, if they are not raising up the money that's required to make sure that they are getting into the you know next season, so they won't be able to play those players. They won't be able to play those players. What is the latest on Frenkie? Obviously, bhai, Frenkie de Jong is the manager's first choice. Obviously, he wants to bring a name. Gaurav bhai saying, अंशु पता नहीं, बट मुझे इस सीजन में लग रहा है यूनाइटेड. भाई देखो, we can definitely try for Europa League. Europa League we should definitely try. For sure. Tarun bhai, welcome to the stream. I hope your health is doing, your health is fine now and you are recovering really, really good. So I think there is some stuff which has not come out regarding. Exactly, Tarun bhai. That's what I'm trying to make everyone understand. No, Ayush bhai, United is not going for Vardy. Samir bhai, Romero came out and he said that Chelsea, Frenkie de Jong will go to Chelsea, and after that he's basically clarified is like, that's his feeling. So basically he has no news. It's just his feeling. And now 13th, Barcelona, they have been rejected by La Liga. They cannot sign any player. They have been rejected. So now, at this point of time, we are just waiting to see what's the next move going to be. 100% Ayush bhai. First season under eriktenhag, that would be great. 100%. Game by game, guys. Cannot think about what's gonna happen after 38 days. So, exactly. मैं मतलब सोचो ना, रिपोर्टिंग की जगह you are basically putting out your feeling as a tweet. In the meanwhile, guys, we are just 9 likes away from reaching 50. If you have missed out on liking it, make sure that you like, share and subscribe. Chirag bhai, welcome to the stream. Romero is Indian media bhai, usse bhi gaya guzara hai ye. Tarun bhai, I believe that as well. I have been keeping a cool head about this throughout the window. So let's say, Dive bhai, welcome to the stream. मैं देखो सिंपल सी बात है ना. वो क्रिस्टेंसन रजिस्टर कर सकते हैं, ना लेवेंडोस्की, ना राफिनिया, ना केसीए, ना कुंडे, और 2-3 जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कराया वो भी नहीं कर सकते रजिस्टर. तो भाई उतना बुरा भी नहीं है अनिश भाई. उतना बुरा भी नहीं है. एटलीस्ट ही इज अ जर्नलिस्ट. आई एम टेलिंग यू, मैं वही बोल रहा हूँ. मैं तो कब से बोल रहा हूँ श्रीनिधि भाई, रोमेरो को देख लो. अब इन द रिसेंट टाइम्स, just watch Romero. He has been avoiding Frenkie de Jong's news. He is not copy pasting anything. He is not copy pasting anything. He is making sure that at this point of time, he is avoiding all the media circus. ठीक है, उसके पास न्यूज है नहीं है भगवान जाने, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आएगा नैश भैया. सबर रखो.
अगर आ गया तो एक ब्लैंक चेक भिजवा देना मुझे अरुणाचल से। आई एम श्योर रोमेरो गॉट हिज। भाई मुझे नहीं पता हाउ इज अ जर्नलिस्ट, और जैसे भी है उसके पास जो भी डिग्री है, I'm just saying that don't believe anything that's coming from Spanish media at this point of time. Spanish media will show their loyalty to Barcelona. English media will try to show their loyalty to United. Simple as that. थैंक यू भैया। मैं वही बोल रहा हूँ कि मुझे फ्रेंकी डियोंग अगर कहीं जाता है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं जाता है कोई दिक्कत नहीं है, बट आई जस्ट फील दैट 3 महीने एक प्लेयर के पीछे अगर हमने लगाया है तो इट्स नॉट गोना बी a total waste. So let's see. Barcelona activating leverage for, भाई ये कि कोई कुछ भी कर ले, 4 के बाद भी they won't be able to register the players. 4 के बाद भी they won't be able to register the players. Imagine that. Imagine that. मैं वही बता रहा हूँ कि they cannot register any of the signings they have made. Also, any of the new contract they have given to the players. I pray that it didn't happen, but obviously we don't have depth, and that's why that would be great, if we can get someone like Sancho in, someone like Ziyech in for 8 million. 8 million में low risk signing है भाई, very low risk signing. नहीं भी चला कोई बात नहीं। चिराग भाई सी द थिंग इज, एक बार किया ना सारे प्लेयर्स के लिए करना पड़ेगा। If you are doing it once, you will have to do it for every player. That's the reason I think we are not giving the 17 million yet. I think we are considering it. I think we might end up paying, but at this point of time, I think we are trying to make sure that we are not being forced into it. भाई 8 मिलियन पाउंड्स है, आई थिंक 8 मिलियन पाउंड्स और यूरोस, चलो ज्यादा का फर्क नहीं है, बिकॉज द टारगेट जब उस तरीके से देखो तो दिस इज ओनली बिकॉज वी आर नॉट, भाई बार्गेनिंग पोजीशन में नहीं है, मैं वही बोल रहा हूँ। गौरव भाई से जीएच ओरिजिनल टाइप प्लेयर लगता है डिफेंसिवली, वही है भाई, डिफेंसिवली ज्यादा एक्सपेक्ट मत करो फॉर समवन लाइक ओजिल। अभिरूप भाई वेलकम टू द स्ट्रीम, आई थिंक इट्स योर फर्स्ट टाइम ओवर हियर। एक्चुअली बार्सिलोना भाई बिडिंग वॉर नहीं हो सकता अभिरूप भाई, दैट्स व्हाट आई सेड बिफोर इन द स्ट्रीम एज वेल। बिडिंग वॉर नहीं होगा, डिफर्ड पेमेंट वॉर होगा। हु इज गोइंग टू पे द डिफर्ड पेमेंट, उसके ऊपर वॉर होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट नो वॉट इज गोइंग टू हैपन, उसके बिना कोई वॉर नहीं होगा। तो भाई देखो इतना तो नहीं होने वाला, बट 8 मिलियन अगर यूरो तक में भी आ जाए तो चलो, आई वोंट माइंड दैट। Guys, 5 likes away from 50. Make sure that you make it reach 50 as well very very shortly, and then we will move on to the next one. Ozil in the prime भाई अलग लेवल था वो। Ozil in the prime was totally different. I totally respect your opinion, Ronaldo lover, but I think he will come. Even if he's not coming, that's fine. As I said, we should trust our manager to improve some of our players which we already have. भाई अनलीश तब करेंगे ना जब ही इज फिट इनफ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसके साथ ये है कि इज नॉट फिट इनफ। भाई बार्सिलोना हैज टू रजिस्टर द प्लेयर्स बाय 13th. Barcelona, they have to register their players by 13th. So let's see. मैं वही बोल रहा हूँ कि अभी पैनिक मोड दबाने का कोई मतलब नहीं। अभी पैनिक मोड जो है ना बार्सिलोना का दबा हुआ है। टुडे लिवरपूल विल डेफिनेटली विन भाई।
कैन नहीं होगा, they will definitely win, you know. So Celia, please let us dream as well. Please let us dream as well, and thanks a lot for your super chat. We definitely need to dream as United fans. And guys, we have reached 50 likes as well. Make sure that we are, increasing on the numbers. That helps a lot. Yeah, FDJ decision, they should have to, it should have to be confirmed by Barcelona before 13th. Because the more they are dealing by 13 के बाद they cannot register the players. 13 तो उनका deadline है. Let's see. Too early to say. Too early to say. If he is leaving, let's see. Shindy by saying some people bribing that TTH is bringing on one. भाई छोड़ो ना, उनको ब्लैबर करने दो. हर किसी को खुश नहीं रख सकते भाई. हर किसी को खुश नहीं रख सकते. समीर भाई, they Marco Silva, he might keep them up, but मुझे बहुत बहुत मुश्किल लग रहा है, बहुत मुश्किल लग रहा है. Exactly. Let's move on to 60, 70. Gonna keep the stream going for a bit longer. Can't we use the... भाई नहीं कर सकते. We have already agreed to a price. Thanks a lot for the sticker, Shambhavi. We have already agreed to the price of it's totally on frenkiedejong. कि आता है कि नहीं आता है, it's totally on him. बहुत मुश्किल है अभी ये बोलना कि भाई 17 मिलियन. भाई हम 17 मिलियन दे भी दे, अगर वो तब भी मना कर सकता है. He can still say no. हमारे पास बार्गेनिंग चिप नहीं है. That's the problem with us. Ronaldo won't start tomorrow. I am 100% sure about that. If he starts, I will be very, very shocked. I will be very, very shocked. But desperate time to call for desperate measures. We might see him, but let's see. अविरू भाई, सेकंड गोलकीपर अगर हमें कोई फ्री में मिलता तो हम उठा लेते. पैसे देके हम नहीं उठाने वाले. I don't think we are going to sign any goalkeeper by putting up money. We might go with Heaton. All right, so Marlene and Celia dreaming together about Frenkie de Jong. Okay, that didn't come out right. Chelsea has UCL advantage. Exactly. Yeah, we will see tomorrow. I think starting him would be a mistake. Because no game time under him during the preseason. No time to gel with the team during preseason. So let's see. Everyone is just delaying the news. No one has any idea at this point of time कि भाई actually में हो क्या रहा है. What is happening actually. So they are like the new strike force. Ronaldo, Marlene and Celia bringing on Frenkie de Jong to United. Guys, the first game of the day is 90 minutes away. Rashford as striker on Sunday. Most probably, Shinidhi bhai. Most probably the option. Most probably. So. Guys who are here for the first time, if you are watching me for the first time, guys, make sure you like, share and subscribe. And get into the comment section. Whatever you want to talk about. Get into the comment section. Bilkul. Thanks a lot, Anish bhai, for joining in. Arman bhai, welcome to the stream. See, as I said, I have no problem at all if he starts. But I will be very, very shocked if he starts. Bruno falls 9 with Eriksen number 6. Let's go, bhai. मुझे कोई problem नहीं है, चिराग भाई. I think we should definitely try.
Shamir bhai, thanks a lot for joining in. Always great to have you out here. He is good. He is Eredivisie good. He is rated highly, but a lot of Eredivisie players are rated highly. I have seen few games. He is good, but I won't say that he is 40 million good. भाई दिस इज कमिंग फ्रॉम मिडर, रहने दो. मिडर की बातें सुनने लगे, सन की बात सुनने लगे तो भाई हो गया हमारा. अपार्ट फ्रॉम मिडर नो वन इज सेइंग अ सिंगल वर्ड. As by I don't even talk about other channels, to be honest. No idea. Arman bhai, no idea. And I'm not looking forward to the third kit, to be honest. I don't think it's going to be better than our first or second kit. So no links, no links. If someone is linking us with Ornatovich, stop reading that. Stop reading that tabloid. Brighton में भाई देखो, Cucurella is definitely going to be a huge miss. So let's see. भाई मैं वही बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा सब्र करो. Wait for a while. मिडर एंड सन के भरोसे अगर जाओगे तो भाई might turn out to be a laughing stock. So भाई मैंने ऑलरेडी अपना गाइस चलो एक क्वेश्चन just for a fun fact, just for a bit of fun. I have already ordered my jersey. Can you guess the name on my jersey? इस सीजन की जर्सी I have already ordered. Shinidhi bhai, I will send you the number of the buyer, the seller. You can order from here and you can take my name. तो थोड़ा जल्दी डिलीवरी हो जाएगा. चलो जल्दी बताओ भाई. I have already ordered my jersey. Can anyone guess whose name I am going for? Ayush by saying Sancho. Celia says Van der Beek. Ronaldo lover says Martinez and Varane start against Brighton. I won't mind at all. Ayush by says Sancho, Van der Beek, Sancho, Martinez, Sancho, Frenkiedejong, Eriksen. मैं देखो Sancho, Van der Beek, everyone knows that I absolutely love them. Chirag bhai says Sancho. Marlene says Sancho for sure. Ronaldo says Sancho. Aditya says Maxos. One person that I know who will get a Maxos jersey is Celia. I have already ordered, Arman. I have already ordered. नरेंद्र कुमार सिंह, शिंदे भाई, ये देखो जोन्स. रोनाल्डो जर्सी आई एम नॉट गोइंग टू टेक. रोनाल्डो जर्सी मैंने लास्ट सीजन लिया था, अब नहीं लूंगा. सांचो. So majority of them are saying Sancho. Daniel by saying Jones. भाई देखो, this time I have tried. I wish you would give in and get Eriksen. Malin, I know your love for Eriksen. So, I really hope that Eriksen does something. See, in the past, I have taken players, this time I have tried something different. Not going with any player's name. I'm going with eriktenhag on my back. Going with eriktenhag on my back. No number. eriktenhag on my back. Yes, eriktenhag, Daniel bhai. नहीं Srinidhi bhai. I'm going with eriktenhag. This time, not a single player. Going with eriktenhag. And no number on the jersey, just eriktenhag. नहीं अरमान भाई, eriktenhag. So this season it's going to be eriktenhag. I will go Ted Lasso. I was very confused about Sancho, Eriksen and Van der Beek. But eventually I was like, of course you can have anyone's name. I am going with full name, Marlene. I am going with full name. Eriktenhag. No number, just Eriktenhag. If he wins us the 21, then Eriktenhag 21.
I obviously we will have to trust our managers here. Yes, going with the manager's name on the back. ETH. Many people wanted me to go with ETH, but for me it was like eriktenhag. You know, बिल्कुल बिल्कुल करण भाई, आई विल शेयर. मुझे एक बार मैसेज ड्रॉप कर देना, आई विल शेयर. एंड गाइस, who has missed out on liking, make sure that you like, share and subscribe. Going with Eric Ten Hag on my jersey. Exactly. Why they will print anything. You have the seller will print anything you want on your jersey. तुम्हें इंडिया लिखवाना है, तुम्हें एंटी ग्लेजर लिखवाना है, तुम्हें ग्लेजर्स की ऐसी की तैसी लिखवाना है, तुम्हें जो लिखवाना है, द सेलर विल प्रिंट इट आउट फॉर यू. तो उसकी टेंशन मत लो. Exactly. I'm going with Erik Ten Hag. I want this set of players. I want this group of players, to earn the name, to earn their name. भाई मैं वो बता दूंगा स्ट्रीम पे, वो क्योंकि क्या बोलते हैं इन पर्सनल, वो तुम सामने से बात कर लेना. डिपेंड्स ऑन द बैचेस एंड डिपेंड्स ऑन द नेम ऑन द बैक. ठीक है, तो ज्यादा का फर्क नहीं पड़ता. मतलब इट विल कॉस्ट लेस देन, इट विल कॉस्ट इन 2000 तक का हो जाएगा गाइस, इजिली. इफ यू आर गोइंग विथ बैचेस एंड ऑल, इवन लेस. मैं वही बोल रहा हूँ, प्राइस का तुम उसी से पूछ लेना. ही विल आस्क फॉर ऑल द डिटेल्स. मैं नंबर शेयर कर दूंगा, तुम उससे पूछ लेना. ठीक है, ही विल टॉक अबाउट द प्राइस, ही विल टॉक अबाउट व्हाट यू वांट. फॉन्ट वगैरह, भाई बहुत सारे सवाल होते हैं. फॉन्ट कौन सा चाहिए, पीएल का चाहिए या फिर कप का चाहिए, बहुत सारे है. बैचेस चाहिए नहीं चाहिए. भाई देखो, जेब्रा शर्ट आई थिंक अपार्ट फ्रॉम बेकहम बहुत कम लोगों को सूट किया वो जेब्रा शर्ट. दैट जेब्रा शर्ट very few people liked. Not taking any player's name this time. Not taking any player's name this time. And who will be the back four? In my opinion, Maguire, Varane, Dalot, and Shaw. If Shaw is not fit in Malacia, मैं वही बोल रहा हूँ कि भाई their short sales was going there. It was going nowhere. It was going nowhere, and then they brought in Beckham, and everything changed. Simon, good morning. Welcome to the stream. Guys, whoever is joining, just make sure that you put that notification bell on so that you don't miss out on any stream. Yes, the home one. I usually go with the home ones. I have this Rashford jersey. This Rashford. Yeah, this is the one jersey, of which D is gone. This is the one jersey I think which was not up to the mark. The color, the shades was everything, but the quality of the jersey was not up to the mark. Yeah, significance is there, but overall, if you ask majority of the fans, really, I think they would say no to the zebra jersey. They would say no to the zebra jersey. Home jersey and away jersey. I think many people are liking the away jersey more than the home jersey, and it has been voted as the number one jersey by ESPN of all, ESPN of all people. So I always get the fans version, Arman bhai. I always get the fans version. I never go for the, players version. Ronaldo lover says my back four is Dalot, Varane, Martinez, Malacia. At this point of time, no one is sure about what our back four is going to be. We might see certain changes like fullback. Dalot is sure. De Gea is sure. Rest free. Let's see.
भाई मुझे तो सदमा लग गया जब ESPN ने वोट किया, ESPN posted that United is number one. Arman bhai, honestly speaking, no idea about the third jersey. And the third jersey, I am never keen on the third jersey. So अगर कुछ न्यूज आती है then I will update about the third jersey, but at this point of time no one has any clue. किसी के पास कोई क्लू नहीं है. So when we don't have the clue, so ज़्यादा speculate करना, if I don't have the information, I cannot give the information. ये वाला हाल है. No, Marlene, the third jersey is not out yet. नहीं भाई, इंजरी उसका लास्ट सीजन चलो जो भी था, दिस सीजन हिज गेम्स विल बी मैनेज्ड. हिज गेम्स विल बी मैनेज्ड. ठीक है. आई एम नॉट पैनिकिंग और स्वेटिंग ओवर वरान जस्ट येट, बट नेक्स्ट इंजरी, अगर उसको सीजन शुरू होते ही फिर से अगर कोई इंजरी हुआ, then definitely I will be in panic mode. Simon, I am not going to believe it. To be very honest, Simon, I am not going to believe it till the time, I see him either staying at Barcelona, because even after activating the fourth lever, they are not going to register the players they have signed. And now they have 7 days to register all the players they have signed. Yes, Ronaldo lover, 5 subs. 5 subs this season, guys. So anything could happen. Both the black and white, pink only filled with Rashford vibes. Rashford, I have this jersey of Rashford, which didn't pan out so well. ये भाई सिर्फ मिरर की तरफ से आदित्य भाई. No one else is reporting it. Already talked about it. इसके बारे में और कोई कुछ बात नहीं कर रहा है. It's just mirror. January King, welcome to the stream, bhai. Definitely, United is the best. Jai Hind. I even took Schweinsteiger's jersey. When he came. मतलब मेरा जर्सी का रिकॉर्ड कुछ ज्यादा खास. He is a winger. Shinti bhai, he is a winger, right winger है वो. We are, Gakpo was basically scouted by Arsenal in the beginning, but they didn't go for him because of the price tag. So Gakpo will cost any team around 40 million. So Gakpo is priced at 40 million. Who is going to pay 40 million? I have no idea. Tomorrow, first goal scorer in my opinion. Hopefully, Rashford starts it with a bang. Hopefully, fingers crossed. Rashford and Sancho, if they are having the time which is expected from them, it can work wonders for us. Daniel Bhai says Bruno. मैं वही बोल रहा हूँ कि अभी स्पेकुलेशन करना मुझे पता नहीं लग रहा कि कब आएगा कब नहीं. अभी कुछ आइडिया नहीं है. At this point of time there is absolutely no idea. इस वजह से मैं कुछ बोल नहीं रहा. If I get any news from any reputed source, I will talk about it. But apart from that, अभी मुझे कुछ आइडिया नहीं है. अभी बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है उसका. Guys, keep liking the stream, keep sharing it. If you are here for the first time, make sure that you are subscribing to the channel as well. Arman Bhai says Eriksen. Daniel says Bruno. Srinidhi Bhai says Maguire hat-trick. Bruno will score at first half, hopefully. Daniel says Sancho will score the first goal. Sancho or Rashford, that will be a huge boost for them. Daniel. भाई मगवायर को सेट पीसेस पे डिलीवरी बहुत अच्छी मिलेगी. नाउ इट्स ऑन हिम वेदर ही कैन डू द जॉब और नॉट. नाउ इट्स टोटली ऑन हिम. भाई होम एंड अवे जर्सी आर एब्सोल्युटली फैबुलस. Home and away jersey at this point of time, absolutely fabulous. In my opinion, Kane will be there, Salah will be there, and Haaland will be there. Very good point made. Very good point made by Simon. Over the years, signing players was never a chore. Trying to get a positive answer out of a player is like exactly.
We have to look at that. Eriksen will start. Let's see. By देखो, without Martial, Eriksen can start, and Bruno can play as a false nine. Otherwise, Elanga will start. अगर हमने रोनाल्डो स्टार्ट करा दिया तो भाई फिर एरिक्सन won't be starting. If we start someone like Ronaldo tomorrow, then Eriksen won't start. Otherwise, Eriksen should be a starter, and Elanga can come from the bench. That's why I said, first team news, only few players are certain. Rashford is certain, Sancho is certain, De Gea is certain, Dalot is certain. Apart from that, apart from like 5 players, you will have to, Bruno, Sancho, and Rashford certain, Dalot certain, DDG certain. These 5 are certain. McTominay and Fred, for many, they are certain, but let's see. Today, Liverpool definitely win. They will definitely win. Cindy versus Martial will be out for 3 weeks. CR7 can come from the bench. He need to get his fitness back. Simon says Sancho or Eriksen could get the first goal around the midway mark. Fingers crossed, Simon. I want Rashi. I want Rashi to go all out. Just keep on going. Keep on going. Don't think about anything else. Just keep on going. So guys, as I said, if you are here for the first time, make sure you like, share, and subscribe. That helps a lot. And get into the comment section. Get into the comment section. That would help a lot. The channel as well, and our communication as well. Jack, welcome to the stream. Why Frenkie de Jong saga will only end when Frenkie de Jong wants it. बात यही है. बार्सिलोना कुछ नहीं कर सकती, यूनाइटेड कुछ नहीं कर सकती, चेल्सी कुछ नहीं कर सकती, दुनिया में कोई कुछ नहीं कर सकता apart from Frenkie de Jong. The saga will end when he wants it to end. Thanks a lot, Himmat bhai, for joining. Stay safe. Liverpool 4, Fulham 0. I want Fulham to score at least one, Simon. Bruno will definitely be there. Sancho, Rashford. Our front three, they have a great opportunity. Is the away kit your favorite kit for this season? Many people liking the away kit, Arman bhai. But for me, home kit, with the collar, I am absolutely loving the home kit. No, I won't buy. I am not, I'm never fond of white kits. I go with the red ones. If there is a blue one, I will go with the blue one. Never fond of white kit. I don't think I have ever bought a white kit. मैंने कभी white kit नहीं किया भाई. Away kit obviously, but white kit I have never bought so far. So tomorrow we will be playing, guys. The watch along will definitely be there. So for the season, make sure that you can join in, guys. That would help a lot. And hopefully we can celebrate the first win together. If Ronaldo scores a hat-trick tomorrow, obviously going to enjoy it, but I don't think there is even a 1% chance of that happening, in my opinion. In my humble opinion, I don't see even there is 1% chance of happening. So I actually wanted to buy a United jersey this year. I just loved it. Cantona jersey, man. बिल्कुल भाई वही वाली, collar वाली vibes, Cantona vibes ही होती है पूरी. So that's why, guys, you can predict the score for tomorrow. Even though when I will start the watch along tomorrow, I will be asking for a score prediction again. If you want to predict it today, you can predict it today. Otherwise, you can definitely predict it tomorrow. The watch along will definitely happen. I will be coming up like 30 or 45 minutes before the game, and I will put up the stream details, the moment the stream goes off. So keep an eye on that. Make sure that you have the notifications on. They could bring on, so many things could happen, Simon. Very difficult to, totally talk about, in a confirmed manner. So, all right. So, guys, Damsgaard has signed for Brentford. Very, very good deal for Damsgaard in Brentford, in my opinion. He's a really good player. Arman bhai, totally depends
If we are going with this team, we will struggle to finish in top four. If we bring in Frenkie de Jong, if we bring in Sesko, we will definitely finish in top four. You know, if we get those players, two players in my opinion, definite top four. If we are not getting those two players in, I think we are going to struggle big time, big time. In my opinion, Brentford won't be relegated, Shindi bhai. I think their structure is good. I think they have added good players, and they in the Premier League they have worse teams. So it's okay, Ronaldo lover. Thanks a lot for joining in. 2-1 to us. Cristiano scored for us. Fingers crossed. Nothing is easy with us, Simon. That's the thing. In my opinion, if we get our signings, definite top four formation in the way. If we get our signings, if we get Frenkie de Jong, if we get Sesko, then otherwise, no. Dr. Bhai, welcome to the stream. Thanks a lot for joining in. So with United, it's nothing easy. Nothing comes easy for United. Nothing comes easy for United. So they are having to keep clean sheet. By the way, first game, the first clean sheet would be like so good for the confidence. So good for the confidence. If we are keeping the first clean sheet, so good for the confidence. थोड़ा सा मैं रिकैप कर दूं भाई रोमानो का भी. Definitely, Simon. Definitely. Rashford will definitely play. Rashford is a sure shot starter. Sancho is a sure shot starter. And Bruno is a sure shot starter. Now, if Eriksen plays, if Bruno and Eriksen both plays, then Ronaldo stays on the bench. If Elanga plays, Ronaldo stays on the bench. So Eriksen stays on the bench. So lot of ifs and buts at this point of time. All right, so Alonso is on the move, as you all know, guys. Alonso is going to be a Barcelona player, but then again, as I said, very difficult for them to register anyone at this point of time. All right, so Bournemouth have reached personal agreement with Marcos Senesi. Oh, sorry, Senesi. He is from Feyenoord. He is Argentinian. So, in the meanwhile, 70 million for Fofana has been rejected by Leicester. 17 million for Fofana has been rejected by Leicester. Now, Juventus are trying to get Kostic. He is not moving to West Ham. He is moving to Juventus. I don't care when he scores, Simon. As long as he's scoring, I just want his full fitness. If he's staying, make him play, make him score the goals. That's it. मैं वही बोल रहा हूँ ना, साइनिंग तो भाई दुनिया भर की कर रखी है. They have made so many signings, but what with those signings? They cannot register. Why, see, when you look at Kunde, he preferred a move, in Spain itself. Didn't want to come out of Spain. Okay, Barcelona, Lewandowski वहां पे इसलिए गया है भाई क्योंकि he wants to show everyone that he is better than Benzema. Okay, when it comes to Rafinha, भाई South Americans की फैंटेसी होती है रियल मैड्रिड या फिर Barcelona. So I would go for Ruiz. I would go for Ruiz any day. He will cost half the price for Neves, and quality wise, if not better, he is at par with Neves. Barcelona is definite laughing stock. Definite laughing stock. Like it's not even a hidden fact anymore. Everyone is laughing at them.
Everyone is laughing at them. And guys, as I always say, if you are here for the first time, like, share, and subscribe. Thanks a lot for joining in. We will keep the stream going for a while. In 10 minutes, in 6 minutes, we will have team news of Liverpool. So we will talk about it and then we will call it a day. On contrary, every fan club would want someone like my hungry president. का क्या करे Daniel भाई? It's not about being hungry. He's putting his club to the ground by making so many signings. Cannot register a single one. Cannot get a single one. So भाई सपोज करो हमने मतलब क्लब का डेट बढ़ा जा रहा है, यू कैन नॉट रजिस्टर प्लेयर्स. तो हंगरी प्रेसिडेंट क्या है? ही इज नॉट सॉल्विंग द इश्यूज that Barcelona is already facing. He is not solving those issues. He is creating new ones by signing so many players, not able to register a single player. That's not hungry president. That's a deluded and out of mind president. Arman bhai, I think we will sign one more player. I think we will sign one more player, not more than that. If we get two, that would be like complete bonus. मैं वही बोल रहा हूँ, पीएल है, दैट्स वाई 70 million मांग रहे हो. एग्जैक्टली मैं वही बोल रहा हूँ. End of the day, he will just put everything on Bartomeu and how Barcelona was run before. Simple. Why we have not tried for someone like Leimer, I have no idea. He's still looking to move. Leipzig is not willing to sell him to Bayern Munich. So, well said. Exactly. Exactly, Simon. Well said. Well said by Marlene as well. That's narcissistic behavior. Simple as that. Simple as that. Imagine, this point I think I have made like 4 or 5 times. Imagine spending 160 million and willing to spend more, but not willing to pay the 17 million that one of your best players at the club is owed. And as I said, now Braithwaite also wants his deferred payment. Braithwaite also wants his deferred payment. He is like, you know what? I have heard enough of this shit. Give me my money. Give me my money. Simple as that. He is asking for his money. He is not settling in for anything less. My Leimer can be a huge upgrade in our midfield. He can pick a pass. He's very hardworking. His runs and, he is like out and out runner, you can say, in the midfield. He never stops running. सागर भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम. व्हाट अबाउट राइट बैक? नहीं भाई, मुझे अभी तक तो नहीं लग रहा. Because we don't have any buyer for Ban Bissaka, and till the time we don't sell Ban Bissaka, हम किसी को नहीं ले सकते. So, and it's not like right back options are cheap in the market. No, it's not cheap. The only cheap option we could have gone for was Mukiele, and we let that option go. So, PK 50 million. PK 50 million he is owed by Barcelona. Daniel, he is a politician who knows at this point of time that his only saving grace is a quick trophy for Barcelona. Only saving grace is a quick trophy for Barcelona. Akash Pai says Leimer is a great player for United. Exactly. भाई 15 मिलियन का पड़ेगा यार लाइमर, 15 मिलियन का पड़ेगा. Absolutely. I think every United fan does. भाई नहीं पे करेंगे हेवी वेजेस, डोंट वरी. लाइमर इज लाइक अ नो ब्रेनर. लाइमर के लिए भाई नो ब्रेनर. मतलब 15 मिलियन में तो तुम ऐसे आंख बंद करके वैसे बंदे उठाते हो यार. फॉर 15 मिलियन यू बेसिकली लाइक टेक अ साइनिंग विथ क्लोज्ड आईज, समवन लाइक लाइमर. व्हाई वी हैव नॉट गॉन फॉर लाइमर, व्हाई वी आर नॉट डूइंग इट, कोई आइडिया नहीं है. चलो गाइस, टीम न्यूज आने वाली है अब लिवरपूल की. So we will talk about the team news, and after that we will call off a day on the stream. So Liverpool team news will be out very very shortly. भाई जब 30-40 मिलियन भी क्यों, जब उसकी प्राइस ही भाई 18 मिलियन है.
He is available for 18 or 20 million, something like that. Last year of the contract. We should have done it, Sagar bhai, but we didn't. We had the chance, we had the opportunity, but the Liverpool team news. Liverpool team news. Okay, it's still not out yet. I am looking forward to it. So Fulham versus Liverpool. Simon says seems to be getting blood out of a stone. We need 4, but the maximum number we can get is 2. Maximum. Maximum like. Alright guys, as I said, just waiting for the alright, the team lineup is here. Team lineup is here. I will just share. Okay. So first of all, Fulham team news, guys. First of all, Fulham team news. Radek as the keeper, Tete, Robinson, Abradibio. Okay, Adrabio, sorry. Rim. This is the back four and the keeper. Then they have Reed, Palinia. Then another Reed, Andres Pereira, Cabano, and Mitrovic. Nowhere near a Premier League team. This team is. So this is the 11 with Liverpool. They have Luis Diaz, Salah, Firmino is starting as the striker. Then they have Henderson, Alcantara, Fabinho, Van Dijk, Matip, Alexander-Arnold, Robertson, and Alisson. That was expected from Liverpool. With Konate injured, so they have put Nunez on the bench. Roberto Firmino is starting, Diaz and Salah. They also have Jota on the bench. No Jota on the bench. Harvey Elliott on the bench, Gomez, Milner, Carvalho. So they are a bit short of strength on the bench. Shiniti bhai, he knows what he's doing. Don't worry. Akash versus Banner, Matt Dybala. Akash bhai, yeah, Jota is injured. Akash bhai, see, they are, at this point of time, I would definitely say that Roma can make a case for top 4 if the signings work instantly, like instantly. Otherwise, they don't have a chance. With so many signings we have seen, it's not sure shot that it will work, at the same point of time. So, Malin is saying Fulham are not even trying, aren't they? Bilkul. Not at all, Malin. I don't think they are trying. I don't then think they care at all. They are just happy to be a part of Premier League. That's it. Exactly. Players like Dybala, Maitland-Niles, Matic, Wijnaldum, these players can still work in Syria. Still work in Syria, but not anywhere else. Bilkul. Negative spend. Dybala for free, Matic for free. Wijnaldum on a loan. So, definitely. PL is very, very tough. So, guys, with this, I will be ending the stream. Thanks a lot for joining in. And tomorrow watch along is there, guys. 30 minutes or 45 minutes. I will put up the time. Make sure that you join in. I will be putting up the stream just after the stream goes off. So, how many Liverpool scoring? I think 4. Akash bhai. Even our macro, definitely. Not at all. I don't think winning them, even 10, 12 games in the season, Simon. With this team, I don't expect a lot. Salah captain, yes, I also have Diaz, Akash bhai. But, this game is basically like a walkover. I just want Fulham to at least get 1 goal somehow. Anuj bhai, welcome to the stream. Let's get clear if Absolutely. Eriktenhag will be blamed for a bit for Frenkiedejong. So Robertson and TA. Hopefully they concede a goal. Hopefully
They concede a goal. For me as well, Simon. For me as well. Chalo. Enjoy the game. Enjoy the rest of the day, guys. And tomorrow night, sorry, not night, tomorrow evening, we will see each other. The watch along will definitely happen. Make sure that you are a part of it. If you can join it, that would be really, really good. I will be starting the watch along like 30-35 minutes before the stream. So make sure you join in. I will putting up the stream just now once this gets over. So Simon says 5-0 Liverpool, Salah with 2 goals. Let's see. See you guys tomorrow. Thanks a lot for joining today. And Shinati Bhai says 3-0 to Liverpool. All right, guys. See you tomorrow. Stay safe. Have a great Saturday. And have a great time with your family. Bye, guys.